Good morning, students. Now today we are going to do the PPC or production possibility curve, also called as the production possibility frontier points. Okay, so first let us know about the definition. So basically it's a kind of curve which shows the production capacity, a different combination of two goods. So it shows the various combination of the two goods by which you can do the production with the given technology and resources. So here this technology and resources will be assumed as constant. Okay, so here we can say that there will be some assumptions of it. So what will be the assumptions here? So here the first assumption will definitely be this technology will be constant. So we'll be assuming it. Okay, there will be no change in technology while this production which will be done. So technology will not change. Second, the resources will be constant. Means resources whatever we are using they are given means constant, and in between we are not going to say that the resources are increasing. So we are not going to assume it that it is increasing or decreasing like that. So these are constant. Okay, then the third point, that all the resources are fully and efficiently used. Okay, so here all the resources are fully means completely you are using all the resources, and efficiently you are using. So suppose if we talk about a country and their production is going on, so we are human resource, we are also doing production. But suppose if in India the half are doing the work and half the rest are not doing work, so will you say that they are operating at the fullest level? No, you will say, sir, the resources are not fully used. Okay, second is efficiently. Efficiently means what? See, if person is working, then whether he is efficient or not, efficiently means the person is working to the fullest, his full capacity. So that is efficient definition. So now here we can say that if a person is not giving 100% and if it is not using his 100% efficiency, then also the production will not be like that. Okay, so here some efficiency which cannot be there, so because of that the PPC curve will not be going or moving forward. So the shape of the PPC curve is basically like this. It's a downward sloping curve like this. Okay, so basically the properties of this curve are, the first property will be definitely, if you say about property of this PPC, what will be the property? The first property will be it is downward sloping curve. It will be a downward sloping curve because we can see that it is going from left to right and it is sloping downward. We will discuss later why it is going, why the shape is like that. The second one will be, okay, the first one is of course it is sloping downward. Then second curve will be, it will be concave. Means if you talk about the shape, look at this shape. Have you seen this concave lens? It is like this. So here it is concave to this origin. This is origin. So it is concave. Okay, so it is concave to its origin. So here इसका shape कैसा रहेगा? The shape will be concave to the origin. Okay, what will be the assumption? Technology will be constant, resources are constant, then all the resources must be fully and efficiently used. What will be the definition? Basically PPC curve is the curve which shows the different possible combination of two goods. Here we are assuming suppose X good and Y good are there. So both are produced and alternative combinations can be seen. And on the basis of this alternative combination, we'll draw this curve as well as the schedule. Okay. So let us do that. Now I am rubbing this. Okay. Now first of all let us understand the schedule. Okay. So schedule of PPC. Let
let us write here schedule of PPC curve. Okay, so what will be the schedule? See, assume here that there is a combination. Let us write first combination here, and here we can take two goods, X good and Y good. So say for example we are taking, or I am taking here X good as wheat, or we can say it is Y good, take it as Y, and here we can say rice is also being produced in an economy. Two goods here are being produced by an economy. Okay, now combination A, B, C, D and E. Okay, so we are writing some combination because already this PPC curve is about the combination of two goods. So these are the two goods, and X good you can take it as X. This is your X good. Okay, now suppose in this economy you are producing 10 kg of wheat. Okay, on the piece of land. So this is a piece of land. Suppose entirely on this part of land what we are producing wheat, only producing wheat. Okay, so now we are not producing any kind of rice here. So here you can say that rice is not produced and the wheat is been produced. Okay, so on the entire piece of land we are producing wheat here, which is our good Y. Now suppose this land, this part of land, if you divide it like this into few pieces, like you can divide it into two pieces, okay, like this, and you can say it 1, 2, 3, 4, you can give it names like this. And actually these names 1, 2, 3, these numbers are nothing but ranking, because here the rank first is the most productive, second is productive, more productive than the first one, then third one is better than second one, and the fourth one is the least productive. So here we can say ranking according to us. You can say this fourth one also is the best as per your ranking, or the first is also as per the best of your rank. So we are here assuming that first rank I am giving here to the best productive. So this is the best part of the land. Okay, and don't forget that on entire piece of land we are producing wheat. Okay, पूरी इस पे हम अभी wheat ही उगा रहे हैं. Okay, so it is 100. Okay, 100 kg you can assume. Now what will happen? See, the second piece, ये जो second unit है, this one, the second ranking. So ये जो part है land का, ये इतना fertile नहीं है जितना कि ये first था. मतलब इसकी productivity कम है, ठीक है? और third इस second वाले से भी कम है productivity के मामले में, ठीक है? और जो fourth वाला है सबसे कम least productive, ये least productive part है, ये least productive part है, ठीक है? अपन इसकी मदद से इसको समझेंगे. अभी मान लो हमने इकोनॉमी में डिसाइड किया वी जस्ट वांट टू ग्रो सम राइस नाउ इन दिस इकोनॉमी. नाउ दिस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कम. दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ राइस बट एंटायर लैंड वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट. नाउ व्हाट विल डू, वी विल शिफ्ट सम रिसोर्सेस फ्रॉम वाई गुड टू एक्स गुड. कुछ रिसोर्सेस को हम शिफ्ट करेंगे वाई गुड से एक्स गुड की तरफ. सपोज वी वांट टू मेक 10 kgs ऑफ राइस नाउ, सो वी विल हैव टू सेक्रीफाइस. तो हम यहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे? बेसिकली व्हेनेवर सम एक्सपेरिमेंट हैपेंस तो हम सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड को यूज में लेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी कम प्रोडक्शन करके देती थी, विच वाज द फोर्थ वन, लीस्ट प्रोडक्टिव. तो यहाँ पर होने वाला नुकसान ज्यादा नहीं है अपना. से फॉर एग्जांपल इट इज जस्ट 90. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 10 का ही लॉस हुआ है. फॉर दिस एडिशनल 10 kg यहाँ पर 10 kg का लॉस हुआ है व्हीट का. नाउ सपोज एडिशनल यूनिट्स हमको 20 चाहिए राइस की. Again a combination. Now this time it will be a more loss because this additional production, because you're shifting more resources. ये जो राइस प्रोडक्शन किया अपन ने, तो अपन ने किया कि आपको मजबूरी में थर्ड पार्ट ऑफ लैंड की तरफ मूव करना पड़ेगा, विच इज बेटर इन प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ दिस फोर्थ वन. ये फोर्थ वन से ये बेहतर जमीन है, इसकी प्रोडक्टिविटी थर्ड वाली जमीन की ज्यादा है. तो हमको यहाँ पर नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है. यहाँ पर 10 का ही लॉस था पर अभी 20 का लॉस हो गया, ज्यादा का लॉस हो गया, राइट. अब क्या करेंगे हम 30 और. ओके, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 30 kg ऑफ राइस. सो हियर नाउ यू हैव टू यूज दिस पार्ट ऑफ लैंड. ओके, सो व्हाट विल बी द लॉस? हियर द लॉस विल बी मोर. नाउ इट विल बी 30. ओके, you can clearly see the difference, 30. Now suppose now on entire piece of land, suppose we decided to make 10 more or 10 more kg we want.
So 40 it is now. Now what will be lost? Now here we will not be producing anything on entire piece of land. We have replaced every every production of wheat is been replaced by rice. अब पूरा का पूरा wheat की जगह हम क्या बना रहे, राइस बना रहे. तो कितना हमको दिख रहा है यहाँ पे 40 जो दिख रहा है, this 40 is what? This is the maximum production which can do. Okay, this is the maximum production according to this. And what is the maximum production in case of wheat? 40. So here if you will say that what will be the marginal rate of transformation or marginal rate of opportunity, या फिर you can say what is the marginal opportunity cost. So basically this marginal rate of transformation we are going to understand first of all, then I will tell you about this marginal opportunity cost. Okay, so here MRT I am writing, which is nothing but marginal rate of transformation. So because this curve is also called as transformation curve, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर चल क्या रहा है, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे हो, एक यूज से दूसरे यूज में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, हम एक यूज से दूसरे की तरफ जा रहे हैं. ओके, नाउ हियर हाउ टू कैलकुलेट दिस एमआरटी. सो द फॉर्मूला फॉर दिस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स. चेंज इन वाई, कुछ लॉस लिया है, यू कैन से दैट इट इज अ लॉस टू गेन. कुछ लॉस हुआ है, डिवाइड करेंगे उसको गेन से. यहाँ पर कितना लॉस हुआ है. ओके, इस सिचुएशन में तो पता नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले का डेटा तो अवेलेबल है नहीं. सो विल बी कैलकुलेटिंग फॉर दिस सिचुएशन बी और कॉम्बिनेशन बी. ओके, तो यहाँ पर कितना है लॉस, पहला लॉस देखेंगे. चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, दिस चेंज इन वाई इज 10 हियर. एंड व्हाट इज द चेंज इन एक्स? अगेन 10. सी हियर इन एक्स एवरी टाइम द चेंज इज 10 10 10 10 का चेंज आ रहा है. यहाँ पर क्या होगा, here in this condition it will be a difference of 20. कितने का आ रहा है? 20. और यहाँ पे गेन कितना है? 10. हर बार 10 10 का ही तो गेन है एक्चुअली. Okay, getting my point, this gain is 10 every time. Here it is a change. Okay, now here 30. What is the change in y? 30 divided by 10 again. And what is the change here? 40 divided by, what is the gain here? 10. Okay, now what is this? This will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4. Okay, 1 2 3 4. So you can see that MRT is continuously increasing here. Marginal rate of transformation continuously बढ़ रहा है. Okay, ये चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है. Marginal opportunity cost MOC and MRT and are one and the same thing. ओके, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली कुछ रिसोर्सेज यू आर शिफ्टिंग टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की तरफ कुछ रिसोर्सेज जा रहे हैं. तो यहाँ पर जब जा रहे हैं कुछ रिसोर्सेज को आप शिफ्ट कर रहे हो तो वहां पर आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखती है. तो वही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो द फॉर्मूला स्टैंड सेम फॉर एमआरटी एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये एक ही चीज होती है, इसके थ्रू कैलकुलेट होता है. हम यहाँ कर रहे हैं, देखो कुछ पार्ट हमने शिफ्ट किया था उस पीस ऑफ लैंड में से, किस पे? वीट की जगह राइस बना रहे थे. सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस इंस्टेड ऑफ वीट. सो वी वर शिफ्टिंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू दी अदर सेकंड यूज. ओके, हम एक यूज से सेकंड यूज की तरफ इसको शिफ्ट कर रहे थे. नाउ रिमेंबर दिस इज इंक्रीजिंग. ये जो एमआरटी इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, दिस इज बेसिकली द रीजन फॉर दिस कॉन्केविटी ऑफ दिस कर्व. इसका शेप कॉन्केव क्यों बना? अब इसको अगर अपन